Good evening, all of you. Welcome to our prelim test series number 2, Ancient and Medieval History. So today we will discuss question and answers. Question number 1. Consider the following statements about the sculptures found at Sanchi. The representation of Salavanajika can be found in certain sculptures. The Salavanjika motif is directly associated with the Buddhist beliefs and ideas. The Salavanjika motif is representing Maya, the mother of Gautama Buddha, who is surrounded by lotus and elephants. So the answer will be only one. Only one. The right answer will be number 1. The representation of Salavanjika can be found in certain sculptures. What is Salavanjika? The beautiful woman swinging from the edge of the gateway, holding onto a tree. सांची स्तूप जोटा भी स्कल्पचर्स अच्छे जब आप भलसे देखिए तो सेठी आप देखिपारे कि ब्यूटीफुल वुमेन से कौन झुलिबा अवस्था रे अच्छे गेटवे रे तो ताकू आपनकर सालाभंजिका बोली कह जाए तो यहाँ सालाभंजिका मोटिव डायरेक्टली एसोसिएटेड बुद्धिस्ट सहित नुह सांची स्तूपटा एसोसिएटेड बट सालाभंजिका मोटिव यहाँ आपनकर एसोसिएटेड नुह डिस्क्रिप्शन रे दिया है देखंतु संस्कृत रे कह जाए एटा को जोटा को आपनकर ए जो इंटीग्रेटिव फिगर इमेज आपको संस्कृत रे कह जाए सालाभंजिका. ओके सेकंड नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Walter Elliot led the excavation at the Sanchi Stupa, hence the sculptures found here were named Elliot marbles. In the Buddhist text Asokavardhana, the foundation of Mahachaitya at the Amravati Stupa has been attributed to Asoka. So, Walter Elliot excavation at the Sanchi Stupa, एटा Sanchi Stupa actually नुह से को जगह excavation करथिले से actually excavation आपनकर करथिले अमरावती. ठीक अछि अमरावती जोटा आपनकर आंध्र प्रदेश अछि अमरावती तो सेटा को से excavation करथिले ताको कह जाय इलियट ऑफ मार्बल्स. तो आपनकर एटा होचे आंसर नेदर 1 और 2 एटा होचे दीटा जो आपनकर भूल अछि. तो एक्सप्लेनेशन आपनकर दिया है टोटल इन 1854 वाल्टर एलियट सी आपनकर कमिश्नर थिले गुंटूर रे सेते बेले तो विजिटेड अमरावती तो सी सेते बेले ताको एक्सकावेटेड करथिले अमरावती को और ताको कहा जाय इलियट मार्बल्स आफ्टर हिम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. With reference to the religious history of India, consider the following statements. The Buddhist Chaitya situated at Kushinagar is associated with the Dharmachakra Pravartana stage of Gautama Buddha's life. The Mauryan Emperor Asoka erected a pillar at Lumbini to mark the commencement of the third Buddhist council at the place. The emergence of stupas during ancient times in India initiated the practice of idol worship with the Buddhism. टोटल होची आपनकर बुद्धिज्म को नेकी क्वेश्चन अछि तो जो ऑप्शन गुडा को ताकू ही देखिले आपनकर बुद्धिज्म रो बहुत सारा क्वेश्चन कवर हे जबो तो देखिया चलंतु कोन अछि. तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट जो देखिया ताले नन ओटा भी करेक्ट नुह तो कौन होची आपनकर बुद्धिज्म देखिया तो फास्ट आपनकर कोन थिला सेतला बुद्धिस्ट चैत्य सिचुएटेड एट कुशीनगर इज एसोसिएटेड विथ धर्मचक्र प्रवर्तन स्टेज. तो जदि हमें देखिवा बुद्धंकर जो स्टेज अच्छे लाइफ रो तंकर चारटा स्टेज देखि तंकर लाइफ जाइछि एक्चुअली. तो फास्ट जदि देखिबा ताको कोन कहा जाय ना महाविनिश कर्मना जोटि कि से निजर घर छाडी के 29 ईयर एज रे से निजर घर छाडी के निजर जो घोड़ा तंकर घोड़ार ना होचे कंथक. ठीक अछि कंथक घोड़ा ऊपर बसी के से पळैथिले घर छाडी के ताको कोन कहा जाय ना महाविनिश कर्मना. ठीक अछि महाविनिश कर्मना. तो एटा होचे तंकर फर्स्ट. देन सेकंड जदि देखिबा सेकंड होचे तंकर कोन ना निर्वाण तांको निर्वाण मिलला एनलाइटमेंट से पाइथिले निर्वाण से पाइथिले तो निर्वाण से कोठी पाइथिले निरंजना रिवर रे. ठीक अछि निरंजना रिवर कूल रे बिहार जोठी तो सेठी से कोन कहथिले निरंजना रिवर कूल रे तांको निर्वाण मिलिथिला. एटा होचे सेकंड स्टेज. तापर थर्ड जदि देखिबा तंकर थर्ड होचे धर्मचक्र प्रवर्तन. तो धर्मचक्र प्रवर्तनटा होचे कोन से जोठी फास्ट सरमन देथिले
ठीक अच्छे सारनाथ रे डियर पार्क सारनाथ रे से फास्ट सरमन देथिले डियर पार्क सारनाथ रे तो एटा को कहा जाय धर्मचक्र प्रवर्तन फास्ट जोठी सरमन देथिले स्पीच जोठी 5 डिसाइपल थिले तांकर सेठी से 5टा डिसाइपल को से सेठी फर्स्ट तांकर स्पीच देथिले ठीक अच्छे धर्म ऊपर चर्चा से करथिले तो ताको कहा जाय धर्मचक्र प्रवर्तन टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ ताको भी कहा जाय ठीक अच्छे फोर्थ होची महापरिनिर्वाण फोर्थ होची महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण मीन्स तांकर होची डेथ हेतला जोटा ठीक अच्छे तो डेथ तो एमती तो धर्मचक्र प्रवर्तन होची कुशीनगर डेथ हेतला तो एटा भूल अछि तो मौर्यन एम्परर अशोक इरेक्टेड अ पिलर एट लुम्बिनी टू मार्क द कमेंसमेंट ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ना थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल नुह एटा लुम्बिनी रे किछि से मार्क करना थिले the emergence of stupas during ancient time in India initiated the practice of idol worship with Buddhism. ना ये stupas ता आगरो भी आपनकर idol worship थिला ठीक अछि तो डिटेल्स रे दिया है जे आपण माने देखि पारबे पढि पारबे with reference to yearly Buddhism consider the following statement in early stages of Buddhism there was equal inclusion of both men and women in the monastic order. Buddha had reservations about including women in Sangha. The internal functioning of Buddhist order was inspired from the ancient republics called the Ganas or the Sanghas. How many of the above statements is are correct? So, apanakara only one. Eta hochi apanakara only one is correct. Kahe ki na? So, eta early stages Buddhism equal inclusion of both men and women. ठीक अच्छे तो बुद्ध रिजर्वेशन नथिला वुमेन मानक पई नगर संघ रे किछि सेमति किछि रिजर्वेशन नथिला ओके देखिए टोटल डिसाइपल्स बुद्ध मिसी से माने जो गठन करथले संघ एटा होछ कोन गोटे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स से माने सब मिसी की गोटे जगह रे रहउतले ठीक अछि जो माने कि धर्म विषय रे चर्चा करथले सेठी तो बुद्ध किछि सेमति फास्ट रे बुद्ध मेन मानक पई अलाउड थिला संघ रे बट लेटर रे से वुमेन मानक पई अलाउ करथले ठीक अछि वुमेन माने भी संघ रे जोग दे पारिबे बोली किंतु रिजर्वेशन नथिला कि वुमेन माने जोग देबे बोली ठीक अछि देखन एठे अछि अपन पढि परिबे द बुद्धिस्ट tradition suggests that Buddha was not initially keen to establish a Bhikkhuni Sangha but ultimately gave into a persistent pressure of his disciple Ananda and his aunt and foster mother Mahaprajapati Gautami. Okay. 5 number. Regarding the Buddhist text, consider the following statement. Buddha's teaching were fast transmitted orally and none of his speeches were written during his lifetime. Okay. The orthodox Buddhist texts were compiled in Sanskrit language. ना अपन जानछन बुद्धंकर जो भी टेक्स्ट गुडा को सेगुडा को पाली लैंग्वेज रे इतला आउ फर्स्ट ट्रांसमिटेड ओरली तो जदि हमें देखिबा बुद्धंकर टीचिंग गुडा को ओरली ही ट्रांसमिटेड होता तांकर डिसाइपल मानक द्वारा तो एटा होची ठीक आपनकर बुद्धंकर डेथ पर जहां भी त्रिपिटक जो लिखा आइची तो से तीनटा जगह त्रिपिटक जो गुडा तो से गुडा आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध सब गुडा से गुडा करा हिची ठीक अछि किंतु बुद्ध जो टीचिंग गुडा बुद्ध फास्ट रे दोथिले से गुडा ट्रांसमिटेड ओरली ही होतिला तो निजर लाइफ टाइम भीतर से किछि भी लिखा हे नथिला आफ्टर हिज डेथ जहां भी जति भी बही अछि तंगर से सब गुडा लिखा हितला सुत्त पिटक विनय पिटक अभिधान पिटक त्रिपिटक The third Rachi, Vinay Pitaka, which contains the monastic rules, was compiled during the second Buddhist council at Vaishali. No, এটা भी wrong आपनकर Vinay Pitaka आपनकर second Buddhist council रे नथला एटा फर्स्ट आपनकर हेतला आ गोटे जोटा हेतला सेटा आपनकर फोर्थ रे हेतला अविधम्म पिटक जोटा ओके डिस्क्रिप्शन रछ आपन हम पढि परिबे टोटल Destiny of Gangas, known locally as Arjuna's penis, is portrayed in stone at कोठी आपनकर हेचे ना मामल्लापुरम ठीक अछि मामल्लापुरम केबे एटा पल्लव टेंपल से गुडा को मामल्लापुरम रे पल्लव टेंपल सब मोनुमेंट 7 to 8 सेंचुरी को बिलोंग करचे गुडा को तो एठी जो गुडा को स्कल्पचर्स अछि से ताको कोन को जाय ना अर्जुनस पेनेंस जो माने होचन कोन डेस्केंट ऑफ गंगास
People perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey. These rituals are not useful. If instead people observe other practices, this would be more fruitful, like treating all creatures with compassion. So, a statement na hoche kahar actually. The above statement reflecting belief in humanity are associated with which of the following ancient figure? तो कहा सहित एटा actually आपनकर ना मौर्यन एम्पायर अशोका ठीक अछि से जेतले चंडाशोक धर्माशोक होइतले जेतले से धाम को निजर प्रचार करथिले तो ता परे से गुडाक स्टेटमेंट गुडाक देथिले ठीक जो गुडाक आपनकर लेखाइ छै थिबो आपनकर मेजर रॉक एडिक्ट माइनर रॉक एडिक्ट ए गुडाक इंस्क्रिप्शन रे लेखाइ छै ठीक अछि Which one of the following is not an yearly Harappan site? तो yearly Harappan site कोटा नुह आपनकर Suhogowra. Actually, we are not yearly Harappan site. It is an ancient village in Uttar Pradesh. So, Rapti au Ami River point rate ache. Amri hoche ancient settlement. Amri. देखिए देखो এটা হচ্ছে Amri. ঠিক আছে এটা কর্ডেজি তো এটা হচ্ছে সিসওয়ান At which of the following locations the major rock edicts of Asoka are found? Yeah, a very important question, potential question for OPSC and other competitive exam. तो এটা হচ্ছে সাহাবাসঘারি মানসেহরা দেন সিদ্ধাপুর রূপনাথ মাস্কি মেজর রক এডিক্ট অফ অশোকা কোটি কোটি আপনাদের দেখা যায় যদি এই ভিতরে দেখিবা তো সাহাবাসঘারি আর মানসেহরা রে দেখা যায় एक्चुअली তো आंसर হবো ओनली 2 তো সাহাবাসঘারি আপনাদের কোটি আছে পেশাওয়ার जोटा एबे तो সেইটি আছে আপনাদের সাহাবাসঘারি थिबो आपनकर एक्सप्लेनेशन देखि दियंतो तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट अछि अशोकांकर 7 पिलर एडिक्ट अछि और सम माइनर inscriptions जो गुडा अछि तो मेजर रॉक एडिक्ट लोकेटेड इन साहवसगरी एंड मानसेहरा नियर पेशावर कालसी नियर देहरादून सोपरा नियर थाने डिस्ट्रिक्ट ग्रीनार नियर जूनागढ़ इन काठियावाड़ धौली नियर भुवनेश्वर एंड जौगड़ इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा वेरी वेरी इंपोर्टेंट धौली नियर भुवनेश्वर एंड जौगड़ इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा In Karnataka, the minor rock edicts, एटी कर्नाटक रे आपनकर माइनर रॉक एडिक्ट देखा जाय जोटे के होचे सिद्धपुर ओके एटा त इंपोर्टेंट नै किंतु एटा होचे आपनकर वेरी वेरी इंपोर्टेंट With reference to ancient India, consider the following statement. The Sudarshan lake was constructed during the reign of Sakka ruler Rudradaman. An inscription written in Pali has described about the lake. The lake was once repaired during the period of Gupta rulers. Okay. तो आपनकर जदि देखियो एटा which statement are correct तो एटा आपनकर ठीक हबो only one Sudarshan lake was constructed during the reign of Sakka ruler Rudradaman ठीक আছে एटा होचे गोटे कोन Sudarshan lake artificial reservoir एटा आपनकर rock inscription 2nd century CE रे जोटा कि संस्कृत रे लिखाई छै The region extending to the south of Kaveri during Sangam age was called as Tenakarai Nadu. The royal seal of Guptas bore the emblem of kahara royal seal of Guptas important Gupta apanଙ୍କର ତ କାହାର ଏଠି emblem ଥାଏ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ନା ଗରୁଡ଼ which sect of Buddhism doesn't believe in idol worship ତ କୋଉ sect ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଜମ ର idol worship ରେ believe କରୁ नथिले ତ ସେ होची हिनयान ତ हिनयान ଆଉ महायान बुद्धिज्म ର ଆପଣଙ୍କର fourth council जोटा थिला तो फोर्थ काउंसिल रे आपनकर हिनयान आ महायान रे से माने डिवाइड हेतले दीटा सेक्टर से माने डिवाइड हेतले फोर्थ काउंसिल अपन हेतला कोठी ना काश्मीर कुंडालवन रे हेतला तो एठी आपनकर कहा अंडर रे किंग थिले के सेतबेले किंग थिले आपनकर कनिष्का थिले किंग आउ सेतबेले चेयरमैनशिप कहा अंडर रे हेतला चेयरमैनशिप हेतला बासुमित्र अंडर रे एगुडा को सब गुडा इंपोर्टेंट आपण मन रखिबे कि फर्स्ट काउंसिल चारटा जगह काउंसिल रो कहा अंडर रे हेतला कोठी हेतला राज्य किंग के थिले एंड चेयरमैन के थिले बासुमित्र
आउ एठी आपनकर ए जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ने हिनयान महायान सेक्ट रे डिवाइड हेतिले माने हिनयान होचंदे माने कोन ए माने डोंट डजंट बिलीव इन आइडल वर्शिप महायान जो माने थिले से माने आइडल वर्शिप रे बिलीव करूथिले बिलीव इन आइडल वर्शिप ओके तो हिने महायान आपनकर के थिले नागार्जुन नागार्जुन जे थिले नागार्जुन सी होचंदे आपनकर महायान सेक्ट को मेनली बिलोंग करथिले आउ महायान टा आपनकर फ्लोरिश को एरिया रे फ्लोरिश हेची जो जेते भी आपनकर देखिबे जदी टर्की हला जापान हला चाइना कोरिया एगुडा सब जगह रे जापान हला चाइना हला इस सब जगह कर आपनकर महायान फ्लोरिश हेची आ हिनयान आपनकर फ्लोरिश हेची जे देखिबे तर श्रीलंका ठीक है श्रीलंका जे आपनकर हिनयान फ्लोरिश हेची तो बहुत इंपोर्टेंट in Buddhism pratimukha deals with the pratimukha important Buddhism deals with basic code of monastic discipline से माने जो संघ रे रहउते ना तो मोनास्टिक लाइफ से माने बंचते तो सेठी से माने को कोड ऑफ कंडक्ट कहा को से माने फॉलो करते केमति से वेरस माने डिसिप्लिन मेंटेन करते दैट इज होचे प्रतिमुख वर्क्स 11th century Sanskrit poet Jayadeva have become the basis of which among the following dance form of India जयदेव अपन जान जने सिलेक्शन कोन ना गीत गोविंद रचना करछन से तो गीत गोविंद जोटा कि ये होचन हमरो ओडिसा रो तो से कहा टाइम रे एक्चुअली ए जो गीत गोविंद हिसाब रे आपनकर को डांस फॉर्म ओडिसा फॉर्म करा जाय तो ओडिसी आंसर होछ ओडिसी ऋषभनाथ वाज द डैश जैन तीर्थंकर इन ऑर्डर ये होचन ऋषभनाथ होचन आपनकर फर्स्ट जैन तीर्थंकर आ अंकर सिंबल होच कोन ना बुल ऋषभनाथंकर बुल हाथी गुंफा inscription at Udaygiri was discovered by very important question तो ए स्टर्लिंग हाथी गुंफा inscription को के डिस्कवर करथले ना ए स्टर्लिंग जेम्स प्रिंसेप आपनकर कोन जेम्स प्रिंसेप आपनकर ब्राह्मी स्क्रिप्ट ये आपनकर ब्राह्मी स्क्रिप्ट ये डेसिफर करथले डेसिफर द ब्राह्मी स्क्रिप्ट पृथ्वीराज चरिता was written by पृथ्वीराज चरित को के लिखिछन आपनकर ना चांद बरदाई चांद बरजे आपनकर पृथ्वीराज चरित लिखिछन कालिदास कालिदास देखिबा मेघदूत शकुंतला एगुडा सब कालिदास लिखिछन विशाखा दत्त होची मुद्रा राक्षस देन शूद्रक होची मृचक कीर्त शूद्रक चांद बरदाई होची पृथ्वीराज चरित द फाउंडर ऑफ संख्या फिलोसफी तो संख्या फिलोसफी आपनकर फाउंडर किए जो देखिए संख्या फिलोसफी तो कपिल होचन आपनकर फाउंडर संख्या फिलोसफी रो इंपोर्टेंट इंडियन फिलोसफी जेहेतु हमर केतरा फिलोसफी अछि 6 फिलोसफी ठीक अछि 6टा हमर फिलोसफी अछि तो 6टा फिलोसफी कोन कोन ना फर्स्ट होछि शिक्षा सेकंड होछि तो शिक्षा आपनकर के ये ना ओके आपनकर फिलोसफी 6 फिलोसफी हमर अछि तो 6टा जदि फिलोसफी अछि कपिल जदि देले संख्या फिलोसफी तापरे जेमिनी हमर देले पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा गोटे होची देखंतु न्याय पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा ओके उत्तर मीमांसा तापरे होची संख्या योगा आ गोटे तापरे होची आ गोटे वैशेषिक ये 6टा होची हमर फिलोसफी तो न्याय फिलोसफी हमर के देचन के कोटा देचन भी इंपोर्टेंट आपनकर तो न्याय फिलोसफी के देचन गौतम होचन न्याय फिलोसफी तापरे आपनकर पूर्व मीमांसा देचन जेमिनी जोटा देचन ना सेटा होची पूर्व मीमांसा ओके कपिल आपनकर संख्या देचन तापरे होची आपनकर गौतम तो गला न्याय कन्नाडा होचन आपनकर के देचन एटा कन्नाडा वैशेषिक आ रहिला आपनकर योगा तो आपनकर पतंजलि हो ठीक अछि पतंजलि होचन योगा important data okay बीजी तिलक stated that Aryans previous year question आसार आपनकर OCS रे तो बीजी तिलक stated that Aryans कोठ आछन्ते were originated from the Arctic region okay Arctic region रो आछन्ते
With reference to archaeological sites found in the Indian subcontinent, consider the following statement. Archaeological sites. Mehergarh is the earliest known Mesolithic site where evidence of farming and herding has been found. Koldihwa, situated along the Belan River, is one of the few Neolithic sites in the Uttar Pradesh. এগুলোকে লক্ষ্য করতে site গুড়াকো কোডা Mesolithic, কোডা Neolithic. The cave painting at Bhimbetka are dated to the Indian Mesolithic period. Okay, Bhimbetka. So how many above statement are correct? যদি ଦେଖିବା ତ ମେହେରଘର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ earliest known as Mesolithic site ତ Mesolithic ନୁହଁ ଏଟା actually ମେହେରଘର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର Neolithic site. Okay, Neolithic site. Koldihwa situated along the Belan river. ହଁ ଠିକ ଅଛି କୋଲଦିହାବା ଆପଣଙ୍କ Belan river side ରେ ହିଁ ଅଛି ଆଉ ଏଟା Neolithic site UP ରେ ଅଛି ଆଉ cave painting and at Bhimbetka dated to the Indian Mesolithic period. ଠିକ ଅଛି ତ only two answer ହଉଛି only two. ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଫେଜ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ତିନିଟା Paleolithic, Mesolithic, Neolithic. Paleolithic ଯଦି ଦେଖିବା ତାକୁ old stone age କୁହାଯାଏ, Mesolithic ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର middle stone age, then ଆପଣଙ୍କର Neolithic ହଉଛି new stone age. Consider the following statement regarding the cities of Indus Valley civilization. The Great Bath found at Mohenjo-daro was plastered and made watertight with the use of natural tar. Kalibangan is the only site where evidence of higher altars has been found. Kalibangan, I don't know actually. The people in Israel civilization were aware of silver, but gold was not to them. Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Bolavira was divided into three parts. So the answer ଆପଣଙ୍କର only two ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର correct answer. ତ Great Bath ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି Mohenjo-daro plastered or made watertight with the use of natural tar. ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ Indus Valley civilization. It is Great Bath ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର plastered made with natural tar. ଠିକ ଅଛି Kalibangan ଆପଣଙ୍କର fire altar ଲୋଥାରେ ବି ଦେଖାଯାଏ fire altar ଖାଲି ସେଠି ଦେଖାଯାଏନି ଠିକ ଅଛି ornament silver ornament valuable ଏଗୁଡାକ ଆମର countryରେ ନଥିଲା ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଥିଲୁ ନା ଆଣୁଥିଲୁ ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦିଟା ସେଟା ହଉଛି ଠିକ ଏଗୁଡାକ ଆମର aware of silver but gold was not known to them ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର 1 ଆଉ 4 ଆପଣଙ୍କର right answer. Answer the following pair yearly Harappan ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର civilization ଗୁଡାକ Harappan sites well known for କଣ ପାଇଁ ଏଟା famous ତ Mohenjo-daro this evidence was wax craft making Lothal importance for stone and metal working Rakhighari earliest known site for cotton cultivation. ତ how many pair correctly match ଯଦି correctly match ଦେଖିବା ତେବେ only ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ହଉଛି ଠିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ଠିକ ଏଟା Mohenjo-daro ହଉଛି evidence of lost wax ଏଇଟା ଗୋଟେ Lothal ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା earliest known for cotton cultivation ପାଇଁ ଆଉ Rakhighari ହଉଛି important center for stone and metal working ଆଉ ଯଦି ବି ଦେଖିବେ Rakhighari ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ Indus site largest Indus Valley site ଯଦି ତବେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ ବାହାରିଛି ତବେ Rakhighari. Consider the following statement with reference to Indus Valley civilization. Some of the raw materials for craft making, such as gold, silver, and precious stones, were locally available in abundance. No, हमें ऊपर देख लो. Tin was imported from Afghanistan and Iran to the cities of Harappan civilization, where it was combined with copper to create bronze. तो आपनकर which statement given are correct? आपनकर B. Only two होची आपनकर correct. ठीक है one. नुह कहीं गोल्ड सिल्वर प्रिशियस स्टोन आम एगुड़ाक सब आमर लोकली अवेलेबिलिटी नथिला आमे ताको इंपोर्ट करथिलु ठीक अछि तो कोट कोट इंपोर्ट करथिलु कॉपर आमे राजस्थान रु आणथुलो देन इवन ओमान वेस्ट एशिया रु भी आमे आणथुलो तो सब गोट प्रिशियस स्टोन देन स्टोन आमे प्रिशियस ईरान अफगानिस्तान एगुड़ाक सब आणथुलो ठीक अछि. Consider the following statement. The people of Harappan civilization were aware of drought-resistant crops such as wheat and barley. As their region didn't receive heavy rainfall. Statement 2. The Harappan civilization relied solely on rain-fed agriculture
as they lack the knowledge and practice of irrigation. Statement 2 टा तो भूल अछि ऑटोमेटिक काहे कि ना सेमान को पाखरे इरिगेशन रो सनो वेल प्लान्ड सिटी थिला सेमान को तो इरिगेशन पे सेमान वाटर स्टोर करके रखुतले आ इरिगेशन सेमान बहुत ही भल से करतले तो एटा आपन को तो स्टेटमेंट 2 टा तो भूल अछि तो which one of the following is correct in respect of the above statement जो देखिबे statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Okay? तो Harappan civilization were aware of drought resistant crop. ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଡ୍ରଟ୍ ହଉଛି ତେବେ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବ କୋ କ୍ରପ ୱେଟ୍ ବାର୍ଲି ଏଗୁଡା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ନଲେଜ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଫ ଇରିଗେସନ ଉପରେ ବି ଭଲସେ ଆୱେର ଥିଲେ among the listed ancient towns which of the following pairs is renowned for having an intricate signboard written in Harappan script and a tidal dockyard respectively तो कोठी थिला आपनकर dockyard आउ इंट्रिकेट साइन बोर्ड रिटन इन हरप्पन स्क्रिप्ट तो एटा होछ आपनकर ढोलावीरा एंड लोथल ठीक अछि ढोलावीरा और लोथल with reference to the religious and cultural history of India consider the following statement the sculptures of the Sanchi stupa depict a scene from the Vesantaka Jataka where a prince donates everything embrace the life of an ascetic. The symbol of stupa in Buddhism is associated with the Mahaparinirvana of Gautama Buddha. The deliverance of the first sermon by Buddha is depicted with the symbol of wheel in Buddhism. ठीक अछि तो हमें देखिले ऊपर कि महापरिनिर्वाण कोन तांकर डेथ को देखौतला तो एटा होछ कोटा ना तीनटा गोडा आपनकर ठीक अछि डिपिक्ट a scene from वेसांतर जातक तापरे आपनकर स्तूप होचे महापरिनिर्वाण डेथ को आपनकर सिंबलाइज करे तो फास्ट सम्मान ऑफ बुद्ध इज डिपिक्टेड विथ द सिंबल ऑफ व्हील इन बुद्धिज्म ठीक अछि with reference to the agricultural technologies of the Indus Valley civilization consider the following statement most Harappan sites are located in the semi-arid land where irrigation was probably required for agriculture so traces of canals have been found in Punjab and Sindh. Terracotta models of plough have been found in the site of Cholistan. The evidence of a plough field found at Kalivingan had two sets of furrow at right angles to each other, suggesting that two different crops were grown together. Only one. So most of Harappan sites are semi-arid land. सेठी ही आपनकर देखा जाय irrigation होचे probably required for the agriculture. आ ସେମାନେ बहुत भल से जानिथिले irrigation. ठीक अछि बट इरिगेशन से माने करूथिले कोठी ना आपनकर सर्तुघाई रीजन रे जोठी अफगानिस्तान जो रीजन रछि सेही रीजन रे करथिले पंजाब और सिंध ए रीजन रे से माने करू नथिले सर्तुघाई अफगानिस्तान जो रीजन रे से माने सेठी करथिले ठीक अछि और टेराकोटा मॉडल्स प्लाउ हैव बीन फाउंड एट द साइड ऑफ चोलिस्तान एंड बनवाली हरियाणा with reference to the craft production of Indus Valley civilization consider the following statement Chamundaro were devoted to craft production, including bead making, shell cutting. Nageshwar and Balakot were the specialized center for making shell objects, including bangles, ladles, etc. Which of the following statement is given are correct? तो अपन करो both 1 and 2. ओडा सोची Indus Valley site. ठीक अछि तो अपन कोटा कोन पय फेमस ताको अपन मन रखिया पय पड़िबो. With reference to the Mesopotamian text, consider the following statement. This text refers that copper coming to Harappan region from a place called Dilmun. This text also refers to Meluha, possibly the Harappan region as a land of seafarers. Which of the above statement is are correct? तो आपण जदि देखुचंदी only 2. Meluha आपण को कहा जाय Indus Valley civilization को से माने Meluha बोली कहउतले तो Meluha एटा होछ आपनकर करेक्ट आंसर Okay, only 2. With reference to Rig Vedic period, consider the following statements. The Rig Veda is the earliest text of Indo-European language and contains the collection of prayers offered to various gods. Okay, ठीक. Rig Veda is the earliest text of Indo-European language. हाँ, निहाती संस्कृत रे लिखा माने एटा होची text and contains the collection of prayers offered to various gods. Women were not allowed to participate in the assemblies during this period.
जब देखिबा ऋग्वेदिक पीरियड रे तो वुमेन माने अलाउ करा होतला लेटर वैदिक पीरियड जेतले असला वुमेन मानको धीरे धीरे सभा और समिति को अलाउ करा गलानी किंतु जेतले ऋग्वेदिक थिला पीरियड रे सेतले अलाउ करा होतला गार्गी मैत्री माने सब बड़ बड़ आपनकर विशारद थिले कहार वेद रो Naditama, another name of Indus River is mentioned in the Rigveda. Na, Naditama होची आपनकर Indus River रो एटा नुह नेम Naditama होची आपनकर कहार ना सरस्वती रिवर रो ठीक अछि सरस्वती रिवर रो आपनकर अदर नेम एक्सप्लेनेशन दिया है आपनकर ठीक अछि With reference to the ancient history of India, consider the following statements. The Battle of Ten Kings was fought on the river Purushini and it established the supremacy of the Bharatas. Tribal conflicts during the Rigvedic period were mainly religious in nature, arising from the disagreements over rituals and sacrifices to appease the gods. तो जल्दी अपन देखु चंदी the Battle of Ten Kings हेतला एटा तो किंतु ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड वर मेनली रिलीजियस इन नेचर एटा होची आपनकर बोल रिलीजियस इन नेचर सेतेबेले नथिला आपनकर अराइजिंग फ्रॉम डिसएग्रीमेंट ओवर रिचुअल्स ए सब सेतेबेले किछि नथिला तो जदी भी समान झगड़ा होतले कहा पई समान झगड़ा होतले काओ ठीक अछि काओ समानकर मूल समानकर एटा ही समानकर धन थिला ठीक अछि तो काओ पई से जहा भी झगड़ा होतला आ पई होतला तो टू टा होची आपनकर बोल तो वन होची आपनकर ठीक अछि सुपरमेसी ऑफ भरतस मानकर सेठी विजय हेतला दशार्सन युद्ध भी आपको कहा जाए बैटल ऑफ टेन किंग को ठीक है आपको मन रखिए दशार्सन युद्ध भी कहा जाए दशार्सन युद्ध दशार्सन with reference to Rigvedic period consider the following statement the Rigvedic people were predominantly called the nomadic people ना जदि देखिबा माने कोन थिले माने सेडेंटरी थिले माने एग्रीकल्चर करले ना एग्रीकल्चर करथिले गोटे जगह रे माने जो जगह रे नदी देखुथिले सेही जगह रे माने कोन करथिले मानको जो सप्त सिंधु अंचल सात नदी अंचल थिले मानको सप्त सिंधु ब्रह्मवर्त बोली कहतला ए एरिया रे माने एग्रीकल्चर करथिले तो माने नोमैडिक तो नहंती ठीक अछि Gaviti is a term mentioned is associated with the sowing and harvesting practices तो गाविस्ती होची कहा को एक्चुअली गाविस्ती जो टर्म एटा माने कहा पे यूज करथिले काओ पे यूज करावला ठीक अछि The Rigvedic people had very little knowledge about agriculture and were mainly dependent on hunting and gathering. तो नुह से मानको एग्रीकल्चर से माने बहुत भलसे जानते एग्रीकल्चर से माने कोतले से माने सेडेंटरी इन लाइफस्टाइल से मानकर थिला तो से माने हंटिंग और गैदरिंग तो करनथले तो एटा होची आपनकर भूल एटा होची आपनकर भूल तो नोमैडिक सब गुडा का आपन नन आंसर होची नन ठीक ना Consider the following statement. The king's post had become hereditary during the Rigvedic period. Hereditary. And the Vidhata were the king-based assemblies which exercised deliberative military and religious function. Sabha Samiti Vidhata, king-based assemblies, okay? The king appointed an officer for administration of justice after consultation with the priest. तो आपनकर होची कोटा आपनकर वनली दीटा स्टेटमेंट अथवा आपनकर ठीक अछि जदि देखिबे आपन किंग्स पोस्ट बिकम हेरिडिटरी ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड तो एटा आपनकर ठीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तो किंग्स पोस्ट बिकम हेरिडिटरी एटा आपनकर ठीक तो जो माने थिले तो मिलिटरी रिलीजियस फंक्शन माने करथिले सभा समिति और विधातर जो माने थिले तो करथिले बट ऋग्वेद डजंट मेंशन एन ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे माने कोन ऑफिसर नथिला With reference to the later Vedic period, consider the following statement. In the later Vedic times, the Rigvedic tribal assemblies lost importance and royal power increased at their cost. Later Vedic period. Women were not permitted to sit in the assemblies. The king's post remained hereditary during this period and there were no traces of election. So how many of the statements are correct? तो देखिबा तो ओनली टू दुईटा स्टेटमेंट आ भितर करेक्ट अछि कोन कोन तो ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द किंग अपीयर इन द लेटर वैदिक पीरियड इलेक्शन आपनकर कोन दोतला नो ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन दोतला ना नो ट्रेसेस ऑफ इलेक्शन तो इलेक्शन ट्रेसेस आपन थिला ओके एटा होचे भूल 1 2 आपनकर ठीक अछि देखिलो हमें लेटर वैदिक टाइम रे केमते वुमेन मानन को सिटी सभा समिति रे अलाउ करा हो नथिला
With reference to later Vedic period, consider the following statement. During this period, the society came to be divided into four varnas. The Sudras were deprived of the sacred thread ceremony and the recitation of the Gayatri mantra. The position of women improved during the later Vedic period and they were allowed to recite the Gayatri mantra. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପୋଜିସନ ଅଫ ୱୁମେନ୍ ଡିଟୋରିଓରେଟେଡ ହେଇଥିଲା, ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ ହେଇନଥିଲା। ଓକେ, ପୋଜିସନ ଅଫ ଦ ୱୁମେନ୍ ଡିଟୋରିଓରେଟେଡ, ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ ଆହୁରି ଘଟିଥିଲା କି ଯୋଉଠି ସଭା ସମିତିରେ ସେମାନେ ୟର୍ଲି ବେଦିକରେ ଆଲାଉ କରାହଉଥିଲା, ସେମାନେ ବସି ପାରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଟର ବେଦିକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରା ହେଲାନି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ଅଛି। सोसाइटी बिकम टू फोर बर्नर्स। ठीक अच्छे, फोर बर्नर आपन सोसाइटी डिवाइड हेतला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्रस वर डिप्राइव्ड सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी। हां, एमाने शूद्रस माने को डिप्राइव करतला, एमाने कोन आपनकर जोटा उपनयन को हवे, जो आपनकर पैता जो पकांदे, तो सेही सेरेमनी सेमाने को अलाउ नथिला। एंड रिसाइटेशन ऑफ गायत्री मंत्र। तो ठीक अच्छे, 1 आउट ठीक, 2 आपनकर ठीक, थर्ड होचे आपनकर भूल। ओके, एटा इंप्रूव हेतला, डिस्क्रिप्शन रे अच्छे आपनकर मन देखि देबे। With reference to the ancient Indian period of 6th century BC, consider the following statement. Mahapadmananda from the Nanda dynasty expanded the Magadha empire towards the northwestern region of the Indian subcontinent. The 6th century BC, renowned for its orchi-colored pottery ware culture, देखो 6th century BC orchi-color, टाइप रो कल्चर अछि, अपन ताको भी मन रखिया दरकार कि orchi को टाइप रो कल्चर अछि। कायाथा कल्चर अच्छे आपनकर, मालवा कल्चर अच्छे आपनकर, देन आपन ऑर्की कलर पोटरी को कल्चर रे देखा होचे। रेड एंड ब्लैक वेयर, रेड वेयर खाली, रेड और ब्लैक वेयर, देन आपनकर होचे ऑर्की कलर पोटरी। तो पोटरी विषय टोटली आपण जानिबा दरकार कि को टाइम रे को पोटरी आछि। ठीक अछि, in this era, the Republic of Vaji implemented a democratic structure that allowed the both women and Kamakaras to participate in the assemblies. By the end of his rule, Mahapadmananda successfully subjugated all the Ganas and republics. So, এটা আপনাদের কোটা আপনাদের ঠিক আছে না, আপনাদের তিনটা আনসার ঠিক আছে, তিনটা ঠিক আছে, তো কোটা কোটা আপনার কোটা ভুল আছে চলুন দেখি দেবা। তো Magadha become the most important Mahajanapada. तो मगधा इंपोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो एटा आपन ठीक अछि। पॉसिबल मीन्स जनपद ए टाइम रे हितला भाजी आर्किकुलर पोटरी, पोटरी is a bronze culture, is a bronze culture. पेंटेड ग्रे वेयर देखि दियंतु, पीडब्ल्यूजी पेंटेड इंपोर्टेंट एटा, पेंटेड ग्रे वेयर एटा होछ आपनकर आयरन एज कल्चर। तो मन रखि दियंतु, आर्टिकलर पोटरी होछ आपनकर ब्रोंज एज कल्चर, पेंटेड ग्रे वेयर होछ आपनकर आयरन एज कल्चर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एटा भी आपनकर इंपोर्टेंट, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मौर्यन पीरियड रो। Consider the following statement with reference to cultural history of India. Yasti and Harmika are the terms associated with women mendicants in Jainism. Yasti or Harmika. Okay. The inscriptions at several stupas bear the evidence of donations made by the Bhikshunis to the construction of these structures. The present elaborate structures are Sanchi Stupa were commissioned during the reign of Mauryan Emperor Asoka. So how many above statements are correct? तो जदि देखियो आमे यष्टि आ हर्मिका एगुड़ा कौन यष्टि आपनकर जदि देखियो हर्मिका एमती अंडाकृति थाए आ एठी जो गोटे एमती थाए ना स्तूप रे ताकू कहा जाय, आपको कहा जाय आपनकर हर्मिका, आपको कहा जाय यष्टि। एठी गोटे अम्ब्रेला टाइप रा को घुड़े के थाए। ठीक अछि, तो चलन देखियो, तो आपनकर होजे गोटे ही ठीक। तो फास्ट आउच भूल, तो डिस्क्रिप्शन देखि जानतो। हर्मिका होचे आपनकर देखंतो अंडाकृतिर जो सेमी सर्कुलर थाए ना अंडाकृतिर, तो ताकू आपण स्तूप रे ताकू आपनकर कोन कह जाय हर्मिका कह जाय, ता ऊपर जोटा थाए ताकू आपनकर यष्टि कह जाय। अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वाज अ मास्ट कॉल्ड यष्टि, सरमाउंटेड बाय ए छतरी, गोटे छता भलिया गोटे अम्ब्रेला भलिया थाए, तो ताकू आपनकर कह जाय। ओके,
With reference to the social structure of ancient India, consider the following statement. Kadesir and Adimai were the term used for landless laborers and slaves. The position of Bhojaka, the village headman, was passed down through generations, making it a hereditary role. Position of Bhojaka. Okay. The Grihapatis were prominent landowners who held the dual responsibility serving as judge and the policeman. Grihapatis. So how many statement are correct? Only one. Only one आपनकर ठीक अच्छे. तो जोटा आपनकर start इटा ही आपनकर ठीक अच्छे. कादेशर and Nardimai landless labor और slave ପାଇଁ use करा जाए. तो position of भुजक एमानकर village headman न हुआ आपण देखि देबे. Mention है जेठी. Bhojaka, there were other independent farmers known as Grihapatis. Okay, the headman, village headman was known as Bhojaka. ठीक है तो सेटा भूल आपनकर और जो गृहपति सेटा आपनकर भूल अछि. गृहपति होचे के ना small land owners. Consider the following statement. The Prasasti provides information regarding the rulers of Aryavarta, the rulers of Dakshinapatha, and the lineage of the Sakas in the northwest. The Prasasti portrays that the patron king as a skilled warrior and a knowledgeable poet. The Prasasti आपण जो देखियो आपनकर कोन प्रशस्ति को प्रशस्ति को कुहा होचे. The statement given above are sourced from which of the Prasastis belonging to the ancient Indian period. तो आपनकर यार होचे प्रयाग प्रशस्ति. प्रयाग प्रशस्ति by हरिसेना गुप्त पीरियड. ए कहा पई आपनकर लिखितले समुद्र गुप्तଙ୍କ पई ए रचना करथिले. ठीक अछि. समुद्र गुप्तଙ୍କର तांको प्रेज करिया पई समुद्र गुप्तଙ୍କର जे ये सेकंड रूलर तो तांको प्रेज पई से लिखितले प्रयाग प्रशस्ति से लिखितले हरिसेना. डिस्क्रिप्शन रे सब देइछे. रूलर ऑफ आर्यवर्त किए थिले, दक्षिणापथर किए थिले ताको आपण जाय परिबे. तो आज भी 40 करवा कालीठू काली पुणी नेक्स्ट करवा. लिंक शेयर कर देबो हमें जो माने जॉइन होआ पे चाहछन से माने लिंक रे जॉइन हेबे और जो माने टेस्ट सीरीज नवा पे चाहछन दे से माने टेस्ट सीरीज यो लिंक रे जॉइन करके कांटेक्ट करके करि परिबे. ठीक अछि. ओके. गुड नाइट ऑल ऑफ यू.